So today we are going to start with this chapter, measures of central tendency. Okay, so I'll just write the heading. Now it's a very important chapter for you all. It's one of the basic chapter of statistics. Now in this chapter, measures of central tendency, we are going to cover different types of measures of central tendency. Now first let's understand how this concept of central tendency came into the picture. Now as you know, we have done chapter 1 and chapter 2. Now, in chapter 1, it was about collection of data. And in chapter 2, it was about presentation of data. So, in chapter 1, we understood the methods of how we will be collecting various data. But in chapter 2, now we have already collected the data, how we are going to present it. So, we learned different ways of presenting in the form of a frequency distribution, in the form of a table, and in the form of graph. But now we are moving further and now we are going to do some analysis कि data है, अब वो डेटा से कैसे हम कोई डिसीजन ले पाएंगे, वो डेटा को मीनिंगफुली हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कैसे अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं. And that is why this measures of central tendency came into the picture. Now what happens is you have lots of data with you. Say for example, you went to a school and you collected marks of maths for 10 standard students, and there were around 1,000 students in a school. Similarly, you went to some other school, so you went to around 5 schools and you collected data of around 5,000 students of 5 different schools. Okay, now just a hypothetical example, तो ज्यादा लॉजिक मत लगाना कि सर 10th में 1,000 बच्चे कौन से स्कूल में नहीं होते, जस्ट एग्जांपल है. ओके, नाउ स्कूल 1 में 1,000 बच्चों का तुमने इंफॉर्मेशन मार्क्स कलेक्ट कर दिया मैथ्स का, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4, स्कूल 5. तो डेटा तुम्हारे पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया, बट इसका कंक्लूजन क्या? तो उसके लिए तुमने क्या किया, यू वांट टू फाइंड आउट कि कौन सी स्कूल के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस मैथ्स में सबसे अच्छा रहा है, किसका सबसे खराब रहा है, किसका रैंक 1 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5. सो व्हाट यू विल डू नाउ इज यू हैव 1,000 नंबर्स विद यू. वो 1,000 नंबर पे तुम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओगे और तुम फाइंड करोगे कि उसका एवरेज क्या है. So you will find average for school 1, school 2, school 3, school 4, school 5. And then you will say कि हाँ school number 3 जो है उसके बच्चों का एवरेज सबसे ज्यादा है. तो एवरेज यानी क्या किया तुमने, एक सिंगल नंबर मिला which represents lots of numbers. That is what is a average. This number is generally a number which is moving around the center of the data, and that is why it is one of the measure of central tendency. Now in real life cricketers, तो उन क्रिकेटर्स का परफॉर्मेंस देखा जाता है कि उनका एवरेज कितना रहा है. तो इफ अ बैट्समैन कम फॉर बैटिंग, ओके, तो तुरंत सारा एनालिसिस आ जाता है उसमें. वन ऑफ द मेजर इज उसका एवरेज क्या है. तो ऑब्वियसली सीइंग द एवरेज वी कैन जज हाउ दिस बैट्समैन इज गोइंग टू परफॉर्म. इनफैक्ट तुम्हारे लिए तुम्हारा जो रिपोर्ट कार्ड है 10th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर अगर कोई तुम्हें पूछता है कि तुम्हारा कितना परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज इज वन नंबर विच रिप्रेजेंट्स योर रिजल्ट्स. यानी तुम्हारा 6 सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस एक नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है. तो
This percentage is basically a average, that is one of the measure of central tendency. कोई भी क्लास का सेक्शन ए सेक्शन बी है और तुम्हें फाइंड करना है कि कौन सा क्लास ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यू सी एवरेज मार्क्स ऑफ ए, एवरेज मार्क्स ऑफ बी, कंपेयर इट. Okay, averages are most widely used measures of statistics what we have seen. और तुम भी averages आगे लाइफ में बहुत बार फेस करने वाले ही हो. तो measure of central tendency यानी centermost number which represents the whole data, okay, are basically known as measures of central tendency. उसमें first measure is mean, which is basically average. उसको हम कहते हैं mean, उसको हम कहते हैं average, और उसको हम also कहते हैं arithmetic mean. Okay, either mean, arithmetic mean और average. ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अलग अलग टाइप के मेजर है, जैसे मीन है, एरिथमेटिक मीन है विच इज बेसिकली मीन. बट मीन में एरिथमेटिक मीन है, वैसे ज्योमेट्रिक मीन भी है, वैसे हार्मोनिक मीन भी है. अब हार्मोनिक मीन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट हार्मोनिक मीन तुम F5 में आओगे फर्स्ट ईयर में बीकॉम बीबीए, तो यू विल फेस दिस. देन ये मीन को कंबाइन किया फॉर टू ग्रुप्स, तो यू हैव कंबाइंड मीन. देन मीन से निकल के हम जाते हैं दूसरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज पार्टीशन वैल्यू. उसके अलग अलग मेजर है, जैसे कि मीडियन है, क्वार्टाइल है, डेसाइल है, परसेंटाइल है. एंड देन यू गो टू मोड. तो मीन, मीडियन, मोड, बेसिकली दीज आर द थ्री मेजर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. फिर उसके अंदर अलग अलग उसके वेरिएशंस है. So you got an idea of what is measures of central tendency. So these measures generally move around the center of the data and they represent the whole data. That is why they are known as measures of central tendency. ये चैप्टर 2 से कैसे अलग है कि चैप्टर 2 में हमने क्या देखा, सिर्फ प्रेजेंटेशन देखा. We are not manipulating the data, we are not performing calculations on the data. Over here, we are performing calculations on the data to make our data very meaningful, ताकि हम कोई डिसीजन या कोई निर्णय या कोई ओपिनियन फॉर्म कर सके या डिसीजन ले सके. समझ में आया? जैसे कि लेट मी वंस अगेन गो टू योर रिजल्ट. 10 स्टैंडर्ड के बाद ओके, जैसे ही 11 कॉमर्स 11 आया स्टैंडर्ड, तो 10th का रिजल्ट आते ही स्ट्रीम सिलेक्शन इज द बिगेस्ट इश्यू फॉर किड्स, बिकॉज अब जो वो सिलेक्ट करेंगे वो पूरी जिंदगी उनके साथ चलेगा. तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है मेरी लाइफ में, लोग अपना इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, लोग अपना एप्टीट्यूड नहीं देखते हैं, लोग ये नहीं देखते हैं कि हमें किसमें ज्यादा मजा आएगा. लोग क्या देखते हैं, परसेंटेज कितना है, ज्यादा परसेंटेज है तो ले लो साइंस, और कम परसेंटेज है तो ले लो कॉमर्स. अरे भाई ऐसा कैसा? तो लोगों का एक मेथड है टू टेक अ डिसीजन. ओके, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है भाई, क्योंकि ज्यादातर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे जो है उनको कॉमर्स का कुछ पता ही नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन. व्हाट इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन? इन्फॉर्म्ड डिसीजन यानी कि मुझे पता है कि साइंस में क्या है, वो तो मैं पढ़ ही रहा हूं, मुझे पता ही है कि उसमें फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है. पर कॉमर्स में अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं है. इकोनॉमिक्स, वो डिटेल में, उसके डिटेल में क्या आता है कुछ आइडिया ही नहीं है. ओसी, मैनेजमेंट, बीओ, पता ही नहीं है. तो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं है, पर डिसीजन इज टेकन बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन परसेंटेज. तो ये अपना तरीका है. ओके, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, बट मेरा ये मानना है कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं है. इन्फॉर्म डिसीजन कब है? क्या मुझे अपॉर्चुनिटी दे कि मैं 10th स्टैंडर्ड में जाऊं हर एक स्कूल में और मैं लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम भी समझाऊं, और फिर एक बच्चा सिलेक्ट करेगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट
साइंस स्ट्रीम में ज्यादा है या कॉमर्स में ज्यादा है? यू अग्री विथ मी ऑल ऑफ यू? तो यू कैन सी ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लोग लेते हैं बेस्ड ऑन सम स्टैटिस्टिकल मेजर। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में भी ये एवरेजेस बहुत यूज होता है। चैप्टर 3, चैप्टर 4 वेरी वाइडली यूज इन स्टॉक मार्केट वेयर पीपल deal in lots of money day in day out. Okay, anyways, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, हर जगह ये सब मेजर्स हम यूज करते हैं। तो यू गॉट अ आइडिया अबाउट व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। सी, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है ना, एक टेब्यूलर प्रेजेंटेशन है। यू अग्री विथ मी? बट वो रिपोर्ट कार्ड को सिर्फ देख के तुम कोई निर्णय नहीं लेते हो। लोग क्या कहते हैं कि परसेंटेज देखते हैं, एवरेज देखते हैं। तो तुमने देखा कैसे तुम इवॉल्व हो गए कि डेटा कलेक्टेड है, डेटा प्रेजेंटेड है, बट उससे शायद कोई डिसीजन नहीं ले पाया। तो हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डाला और वो फॉर्मूला से हमें एवरेज मिला, दैट इज योर परसेंटेज, एंड फिर समवन टुक अ डिसीजन। Got it, all of you? You got an idea about it? Now, you have already studied mean. तो ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत ही नया है सर, मीन तो हमें पता ही नहीं। 10th स्टैंडर्ड में तुम्हारे सिलेबस में था मीन, तो तुम्हें बेसिकली मीन क्या है वो तो पता है। नाउ यहाँ पे हमें मीन में क्या सीखना है, यहाँ पे हमें मीन में सीखना है अगेन व्हाट यू हैव डन, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव डन इन योर 10th स्टैंडर्ड, बट हियर वी विल गो इन मच डिटेल। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मीन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। धनश्री, डोंट यॉन, दैट टू ऑन माय फेस। वीडियो ऑफ कर दो बेटा, लर्न फ्रॉम योर कलीग्स हु आर नॉट विजिबल। Okay, why they are hiding their face? Okay, maybe they are like this, maybe some are doing some other activity. हाँ, तो अच्छा नहीं है ना, सर ने देख लिया, कैसा डीमोटिवेशन आ जाता है कैसे। एनीवेज, तो अब ये टेक्निक सीखो, तुम्हारे कलीग से कितने स्मार्ट है लोग कि कैमरा बंद ही रखते हैं। ओके, ताकि सर देखे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे for different type of data we are going to study mean, and in detail we are going to study combined mean, weighted mean and geometric mean. तो चलो फिर शुरू करते हैं with the formulas and all। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंसेप्चुअल डिफिकल्टी, समझ में आया ये कंसेप्ट क्या है? सी, स्टैट्स है ना, पूरा फॉर्मूला बेस है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ गोखम पट्टी करो, फॉर्मूला याद रह गया, कैलकुलेशन किया, मार्क्स आ जाए। वो पढ़ाई ही क्या जहां पे तुम्हें वो पढ़ने का पर्पस नहीं पता हो। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन अवर रियल लाइफ। हम जो भी करते हैं वो आगे हमें काम आने वाला ही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो तुम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो तो you learn it from the point of view of how it will be useful to you, why we are doing this। just फॉर्मूला है, फॉर्मूला डालो, मार्क्स मिल गए, मजा आ गया, नहीं। पता चला सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कंसेप्ट पता चला। ओके, नाउ नोटबुक ले लो साथ में। नाउ मीन के फॉर्मूला पे हम आ जाते हैं। मीन, mean is denoted by x bar. Okay, x bar is mean. Now formula for mean is what? Mean is equal to sigma xi upon n। नाउ ये एक जेनरिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है कि मीन क्या है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा यानी क्या? सिग्मा यानी समेशन, समेशन यानी टोटल। तो मीन का बेसिकली फॉर्मूला ऐसा है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन upon number of observation, and that is why we have this formula sigma xi upon n। You may write with me,
ओके नाउ ये फॉर्मूला तो तुमने लिख लिया. नाउ सी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड बेस्ड ऑन on the type of data we have to apply formula to find out value of mean. Now the data is divided into three parts. First is raw data. Now, what is a raw data? Okay, data divided into three parts. First is raw data. Raw data यानी क्या कि नंबर्स बिखरे पड़े हैं, कोई सिस्टमैटिक वहां पे वो नंबर्स को देख के तुम कुछ भी कंक्लूड कर पाते नहीं हो. जैसे कि तुम्हारे नोटबुक में 50 नंबर तुमने लिखे, तो वो रॉ है. यू आर नॉट एबल टू मेक आउट एनीथिंग फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन. रॉ यानी कच्चा. इट इज ऑल्सो नोन एज अनग्रुप्ड डेटा, यानी कोई ग्रुपिंग नहीं है, उसको सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं किया है, सिर्फ नंबर्स लिख दिए. तो रॉ डेटा के लिए ओके, if you want to find out mean, there are two methods. First is a direct method. As per this direct method, mean is equal to sigma xi upon n. That's it. That's it. Now, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड. एक टाइम था जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, एक्सेल नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, मैन्युअली सब करना पड़ता था. तो दैट इज वाई टू टाइप्स ऑफ मेथड इवॉल्व. वन इज डायरेक्ट जो इजीली तुम कर सकते हो, और अगर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है तो यू गो फॉर शॉर्टकट मेथड. नाउ over here the formula is x bar is equal to a plus sigma d upon n. Now what is a? A is equal to assumed mean. Now what is d? D is basically deviation, is xi minus a, assumed mean. What is n? N is number of observation. Got it? Are you writing with me? Okay. Now ये हो गया तुम्हारा raw data. Okay. Now let's go to second category of data, that is discrete data. Discrete. Now, let me give you an example of discrete. Discrete data कैसा होता है, जहाँ पे xi होगा सब नंबर्स और fi होगा यानी फ्रीक्वेंसी. ओके, ऐसा एक टेबल होगा जहाँ पे xi भी है और fi भी है. Now over here, if it's a direct method, the formula is x bar is equal to sigma. अब रॉ में क्या था, सिर्फ xi था यानी ऑब्जर्वेशंस थे. पर डिस्क्रीट में हो गया xi fi, तो फॉर्मूला सिग्मा xi के बदले सिग्मा fi xi अपॉन n. बट प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो इधर, यहां पे जो n है, please pay attention for a while. Stop writing. Stop writing. See, यहाँ पे n क्या है? n is number of observation. तो यहाँ पे n के लिए तुम ये xi का टोटल मत कर देना, इसका टोटल मत कर देना. n is what? n is total of frequency. So sigma fi यानी total of frequency is n. Is this clear? Is this clear? गलती मत कर देना कि 1 2 3 4 5 n is 5. No, frequency is what? Number of time of observation appears in a data. So that is your total number of observation. Understood this? Okay, so यहाँ पे n is what? n is equal to total of frequency. मैं simple language में लिखता हूँ total of frequency.
which is what? Sigma Fi. Got it? Now, in shortcut method, x bar is equal to a plus. As you can see, x हो गया fi xi, तो सिग्मा d हो जाएगा सिग्मा fi di अपॉन n. Sigma fi di upon n. Now you know what is assume mean. A is assume mean, D is xi minus a, fi di यानी यहाँ पे एक और कॉलम आ जाएगा fi के बाजू में di, और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. जब सम्स करेंगे तब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा ये कैसे होता है. प्रोसीड नाउ. ओके, नाउ सी डिस्क्रीट में है ना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये जो नया टेक्स्ट बुक आया उसमें दे आर ऑल्सो डूइंग इनटू सी मेनी अ टाइम्स, इनटू सी. ओके, बट राइट नाउ मैं इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम इसके सम्स करेंगे तब मैं ये बताऊंगा यहाँ पे इनटू सी का मतलब क्या है. दैट इज व्हाई आई हैव नॉट रिटन इट राइट नाउ. ठीक है, अभी मैंने सिंपल फॉर्मूला ही लिखा है. गॉट इट? नाउ थर्ड कैटेगरी, हमारा तीसरा कैटेगरी है कंटिन्यूअस. नाउ कंटिन्यूअस डेटा कैसे तुम्हें पता चलेगा? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कंटिन्यूअस डेटा? ध्यान दो बेटा, कंटिन्यूअस डेटा में इंफॉर्मेशन कैसा दिया जाएगा? यू विल बी गिवन क्लास एंड यू विल बी गिवन फ्रीक्वेंसी. गॉट इट? You will be given class and you will be given frequency. Now class 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसा दिया जाएगा, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा. नाउ डायरेक्ट मेथड, आई एम राइटिंग डीएम. ओके, डायरेक्ट मेथड में formula is again x bar is equal to sigma fi xi upon n. Now dear students, मुझे ये बताओ, यहाँ पे xi तो है ही नहीं, तो कैसे xi लेंगे हम? upper limit plus lower limit divided by 2. So what is that known as? Mid value. That is known as mid value. Very good. So यहाँ पे क्लासेस और फ्रीक्वेंसी के बीच में मैं लिखता हूँ xi. xi is the mid value. So lower limit plus upper limit divide by 2. So I'll write over here xi is the mid value. Mid value यानी क्या? 10 to 20 है तो xi आ जाएगा 15. 20 to 30 है तो xi आ जाएगा 25. ओके, तो fi इंटू xi फाइंड करेंगे, उसका टोटल करेंगे and we'll find the value of mean. But shortcut method में x bar is equal to, formula is a plus sigma fi di upon n into c. Now इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ बिकॉज पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ यहाँ पे a is the assume mean, so you already know what is a, we have written over here. But d क्या है? d is typical over here. d is xi minus a upon c. Now what is c? c is the class length. c is the class length. यहाँ पे मैंने कहा था कि इंटू सी दिया है नए टेक्स्ट बुक में, पर अभी मैं नहीं करा रहा हूँ बिकॉज ये सी का मतलब कुछ और है, बिकॉज यहाँ पे क्लासेस आते ही नहीं है. तो जब हम सम करेंगे तब मैं समझाऊंगा. बट ये शॉर्टकट में तो दिस सी मीन्स क्लास लेंथ. सो प्लीज राइट द फॉर्मूला. Excuse me, sir. या
सर यहाँ पे डी की जगह पे यू आई लिख सकते हैं नहीं तो कंफ्यूजन ना नहीं हो। नहीं डी ही यूज करना बेटा કેમ કે ટેક્સ્ટ બુકમાં એ જ યુઝ કર્યું છે so your teachers will expect you to use D only while you have used U in your 10th standard यस 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में यू आई दिया था। हाँ दैट्स ओके ये सब क्या होता है आई टेल यू ये टेक्स्ट बुक्स बनती है फ्रॉम रेफरेंस बुक्स और रेफरेंस बुक में अलग अलग ऑथर ने अलग अलग अल्फाबेट्स यूज किए हैं तो it's okay you now remember it as D only because it is most widely used as D deviation okay now let's proceed to the sums. Now in my video lecture, I have solved the exercise sums. Okay, so over here we will solve either illustrations or our material. You all have got the material. Please take it out. Our study material. Okay, let's do. Wait a while. I'll just open the material. Sir, can you share the material we are in it? Yeah, I'll do that. I'll do that. Hold on. Okay, now come to this extra material. You will का जो material मैंने दिया है उस पे आ जाओ. Now question number 2. Okay, the weight of players of a cricket 11 are respectively 60, 57, 52, 60, 65, 68, 60, 55, 63, 52, and 59 kg. Find the mean. Now, very simple. You just have to write the numbers and then do the total and find the mean. So let's do the sum. Just copy the sum. Now, over here, how to represent this in your answer sheet. Okay. Now, first you write xi, your weight. सर सेकंड सम कॉपी किया है। Oh, second. Missed it. Okay. Now, okay. Weight. Weight we take as xi. So write the weight vertical 60. Okay, so vertically you have to write 60, 57, 52, 60, 65, 68, 60, 55, 63, 52, 59. Okay, so 60, then 65,
then 68, again 60, then 55, then 63, then 52, and 59. So xi, now we have to do the total. 651. 651. So xi मिल गया हमें, total is 651. Now to find out mean, the formula is very simple. X bar is equal to sigma xi upon n. So 651 upon, you have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So upon 11. Find it. 59.18. 651 divided by 11. 59.18. So 59.18 kg is the answer. Now students, let's see whether we are getting the same answer with shortcut method. Now shortcut method क्या है? ध्यान दो please. Shortcut method में you need di. So di is equal to xi minus a. A is a assuming. तुम कोई भी number assume कर सकते हो, but normally we assume a number which is multiple of 10, so it becomes easier for us to subtract. So let's take over here 60. Okay, we take a is equal to 60, and then let's find out now xi minus a. So 60 minus 60 is 0, 57 minus 60 is minus 3, 52 minus 60 is minus 8, again 60 minus 60 is 0, 65 minus 60 is 5, 68 minus 60 is 8, again 0, again minus 5, then 3, then minus 8, and then minus 1. Do the total. पहले पॉजिटिव कर लो, फिर नेगेटिव उसमें से माइनस कर लो. सो पॉजिटिव इज 5 प्लस 8 प्लस 3, 5 प्लस 8 प्लस 3 minus 3 minus 8 minus 5 minus 8 minus 1 minus 9. Are you getting minus 9? Are you getting minus 9? Over here, minus 9. Now let's apply the formula. Formula is x bar is equal to a plus sigma di upon n. So which is equal to, assume mean is 60 plus sigma d is minus 9 upon n is 11. So which is equal to 60. Plus of minus becomes minus 9 divided by 11 is equal to 0.818. So 0.82, which is equal to 59.18 kg. सर Yeah? इसमें हम ए में मिडल वैल्यू भी ले सकते हैं, एक्स आई में कोई भी. हाँ, कोई भी वैल्यू ले सकते हो. सी a is assuming, okay? Assume mean you are assuming any number as mean. तुम इसके अंदर से भी कोई नंबर ले सकते हो, इसके बाहर से भी ले सकते हो, बट जनरली we take a number which is multiple of 10, जो हमें लगता है वो सेंटर मोस्ट है. अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मुझे पता था मीन was 59.18, तो मैंने 60 लिया. तुम इसमें 50 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर तुम कंफर्टेबल होने चाहिए. कैलकुलेटर के बगैर तुम प्लस माइनस कर सको ऐसा नंबर लेना, अदरवाइज बहुत टाइम चला जाएगा कैलकुलेशन. गॉट ओके इट? सर. यस. तुम अगर 100 लोगे ना तो भी आंसर करेक्ट ही आएगा. ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो 100 से भी करेक्ट आएगा, बट फिर
बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे. So take a number which is center most, जो तुम्हें लगता है seeing the data. Okay. Now over here you can see the answer is same. So 59.18 and 59.18. So any method you use, your answer will always be the same. You understood both the formulas? Okay, now do the first one on your own. Do the first one on your own. First one, is it discrete or is it raw? पहले डेटा देख के मुझे ये बताओ बेटा, ये डिस्क्रीट है या रॉ है? raw, Discrete. raw, या इट्स Raw. डेटा, ये डिस्क्रीट नहीं है. ओके, यहाँ पे विड्रॉल ऑफ बुक्स है ऑन वेरियस डेज. तो यहाँ पे ये जो 532, 438, 236 है, दैट इज एक्स आई. So do the first one and the third one on your own and tell me the answer. सर कोई भी मेथड से करें? नहीं, डायरेक्ट मेथड ही करो. ओनली डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट नहीं करना है, डायरेक्ट ही करना है. और थर्ड में तो दिया ही है कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है, बट सिस्टमैटिक करना. ओके, एक्सआई प्रॉपरली लिखना, फॉर्मूला लिखना. ऐसा नहीं कैलसी पे करके आंसर बता दिया या आंसर लिख दिया. प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना. Let's go to this illustration 3. Okay, important short sum. It can come in your exam. Now, this is from the textbook. The mean weight of group of 20% was found to be 55. Later, it was discovered that one of them reported her weight as 45, which was actually 54. Find the correct mean of their weight. Now, wrong observation, correct observation वाले sums आते ही रहेंगे. उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? You write what is given to you. Okay. Now, over your mean weight of 20%, group of 20%. So n is equal to 20 लिख लो, was found to be 55. So mean is equal to 55 लिख दो. Now बाद में हमें क्या पता चला? That one of them reported her weight 45. So wrong. Wrong observation हमने क्या ले लिया? 45. Correct observation. Now correct observation क्या है हमारा? Correct observation है 54. It means what? कि ऐसा जो इंफॉर्मेशन था उसमें एक ऑब्जर्वेशन हमने गलत ले लिया, जिसकी वजह से हमारा टोटल भी गलत आ गया. So because one observation is wrong, sigma xi also was wrong. So over here, our first step is to find out wrong sigma xi. यानी पहले हमें गलत टोटल फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसको निकाल देंगे और करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे. So first let's find out wrong sigma xi. Now formula of mean is x bar is equal to sigma xi upon n. So therefore wrong sigma xi is equal to, now क्या करेंगे? xi फाइंड करना है, sigma xi, तो n into x bar. So x bar into n, which is equal to 55 into 20, which is equal to, calculate it, 55 into 20, 1100. So wrong sigma xi is equal to 1100. Now what now what we have to do is we have to find out correct sigma xi.
Now to find out correct sigma xi, we write correct सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू जो रॉन्ग टोटल है उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 45 को हम माइनस कर देंगे और करेक्ट ऑब्जर्वेशन 54 को हम प्लस कर देंगे, यानी गलत है उसको निकाल दिया और करेक्ट को ऐड कर दिया, तो इट कम्स टू -45 प्लस 54, इट कम्स टू 1109। नाउ तुम्हारे पास करेक्ट सिग्मा xi है, तो लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट मीन। सो करेक्ट मीन x bar is equal to correct sigma xi upon n, which is equal to 1109 upon n. N is how much? N is 20, which is equal to 55.45 kg. Answer. Got it, all of you? Got it, all of you? Yes. Okay, now see, आज जो होमवर्क में मैंने तुमको सम्स दिए हैं उसमें रॉ भी है और डिस्क्रीट भी है, तो तुम मेरा वीडियो लेक्चर देखना और वीडियो लेक्चर देखते देखते पहले जो वीडियो लेक्चर में सम्स है वो करना, दैट इज पार्ट ऑफ योर होमवर्क। उसमें डिस्क्रीट का जो इनटू सी वाला पॉइंट है वो मैंने डिस्कस किया है, तो तुम सिर्फ होमवर्क करने के लिए मत करना, वीडियो लेक्चर देख के ही करना। इज दिस क्लियर? तो पहले वीडियो लेक्चर देखना, सम करना, उसके बाद बाकी का होमवर्क करना। गॉट इट ऑल ऑफ यू? कोई डाउट डिफिकल्टी हुआ तो कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक फ्रैक्शन वाला टिपिकल सम भी दिया है मैंने, वो भी मेरे वीडियो लेक्चर में सॉल्व है, तो तुम ये लेक्चर प्लीज देखना। ओके, तो आज के लिए आई थिंक इट्स इनफ। आई विल सी यू टुमारो with continuous, we will see tomorrow sums of continuous frequency distribution. Okay, ચાલો તે સર કેશો ને કાલે શું કહું? કાલે શું કહીશ? આ જે હોમવર્ક આપ્યું એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ માંથી એના આન્સર હા, એવા જ આપ્યા છે કે તમને આન્સર મળી જ જશે, અને એક્સરસાઇઝના सम्स આઈ હેવ ઓલરેડી સોલ્વ। ઓકે, તો એ લેક્ચરની અંદર જ એમાં આન્સર છે અને બાકી ઇલસ્ટ્રેશન છે, અને જે મટીરિયલના છે એ તમને જે નહીં ખબર પડે એ મને કહેજો, મારા ખ્યાલથી એ પણ તમારાથી થઈ જ જશે, વાંધો નહીં આવે। વી કેન ડિસ્કસ ધ આન્સર ફોર મટીરિયલ ટુમોરો. ઓકે, ઓકે